ये आपने डिस्कवर कब किया कि आपके पास ये एक टैलेंट बचपन से है? बेटा, मेरे नाना जो थे वो दाग दहलवी के शागिर्द थे, शायरी करते थे। और हैदराबाद दक्कन के जो कमिश्नर होता है वो अव्वल ताल्लुक़दार थे। तो घर में जिगर साहब का आना, मौलाना मौदूदी साहब का आना, मौलवी अब्दुल हक का आना, ये लोग हर जुमेरात हफ्ते के दिन हमारे यहाँ होते थे, मुशायरे होते थे। नरगिस जो इंडियन एक्ट्रेस थी, उनकी माँ जद्दन बाई वो हमारे यहाँ गाती थी, क्लासिकल आके महफिलें होती थी। तो बजिया ने बचपन में लिखना शुरू कर दिया, संजीदा लिखती थी। 12 साल की उम्र में उनका नावल छप गया। पाकिस्तान आए तो जहरा निगार ने शायरी शुरू कर दी। सारा नकवी ब्रॉडकास्टिंग में चली गई, वॉइस ऑफ अमेरिका, BBC, बहुत ही मशहूर हो गई वो। मिसेस काज़मी डिज़ाइनर बन गई। तो एक ही फील्ड बची थी कि कोई मज़ाक मेरे ख़ानदान में नहीं करता था, क्योंकि बहुत परेशानी से गुजर रहे थे। तो मैंने कहा कि मैंने पढ़ा था स्कूल में ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब से, जिनका मिर्ज़ा गालिब बंदर रोड पे तालीमी बालगान, लाल किले से लालू खेत, उनसे 6 साल पढ़ा। एक ही जमात में नहीं, हर जमात में वही उर्दू पढ़ाते थे मुझको। 6 बरस मैंने उनसे पढ़ा। जब मैं लिखता था तो मुझसे कहते थे तुम मुख्तलिफ लिखते हो सब बच्चों से। मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी बहुत आता है। तो ये गुस्से को तुम बरकरार रखो अपने और लिखते रहो। फिर जब मैंने अखबार में मुलाजिमत की तो नसरुल्लाह खान साहब मेरे साथ थे, डॉन ग्रुप में। बहुत उद्दा कॉलम लिखते थे, वो भी मज़ाक तंज में लिखते थे। तो फिर ये मैंने फील्ड ले ली कि मैं ये करूँगा। क्या उम्र थी उस वक्त? ये काम मैंने शुरू किया था 67 से। स्कूल में तो था 50s में, जब भी शुरू कर दिया था। मगर टेलीविज़न के लिए लिखना 66 में। पहले हीरो था मैं एक प्ले में, उनका फर्स्ट लॉन्ग प्ले था, उसमें मैं हीरो था। वाह। मैं और रुखसाना अमीर मेहमान। वो 120 मिनट का प्ले था, पहला लॉन्ग प्ले था PTV का। उसके बाद मैंने अपने आप को देखा एक्टिंग करते हुए, तो मैंने कहा नहीं, मुझे लिखना चाहिए। फिर मैं लिखने में आ गया। इसमें जो आपने एक बात की है कि बचपन से जो आप लोगों को एक्सपोजर मिला था, बहुत सीजन राइटर्स का, पोइट्स का, मतलब एक आपके घर में एक माहौल ऐसा था। जब यहाँ PIB कॉलोनी में रहते थे, वहाँ भी फैज साहब बैठे हुए हैं और पतरा साहब बैठे हुए हैं। ये सब इन सादक़ैन शाकिर अली मेरे पड़ोस में थे। मैं पेंट करता था, क्योंकि रंग वगैरह नहीं थे मेरे पास। तो मैं कोयले से नानी की और अम्मा की तस्वीरें बनाता था कि गुस्से में बैठी हुई हैं, कि डबल रोटी के पैसे नहीं है, कौन लाएगा। तो उन लोगों की तस्वीरें बनाता था कि नानी इस तरह हाथ रख के बैठी हुई है, अम्मा सर पकड़े बैठी हुई है, और ये 10 बच्चे बैठे हुए हैं। तो पूरे ग्रुप में कोयले से बनाता था। शाकिर साहब आते थे, बोले ये कौन करता है? मैंने कहा मैं करता हूँ। तो कहते हैं रंग भरो, बहुत अच्छी। मैंने कहा रंग के पैसे नहीं है। तो उन्होंने कैनवस और कलर्स और ब्रशेस ला के शाकिर साहब ने दिया। अच्छा, तो इसमें क्रिएटिविटी पूरी फैमिली में है। ये अगर आपने जो बात की है, आपकी पूरी फैमिली में कोई ना कोई करता है। एग्जैक्टली। क्योंकि जब वालिदैन का इंतकाल हुआ मेरे वालिद का, तो सिर्फ 10 बच्चे छोड़ के गए, और ना बैंक में अकाउंट था, ना गाड़ी थी, ना घर था। 10 भाई बहन, 6 बहनें और 4 भाई, माशाल्लाह। तो हमें खुद कुछ ना कुछ करना पड़ा। और आपस में 10 में मोहब्बत भी इसी वजह से है कि हमारे पास जायदाद नहीं थी। जिनके पास जायदाद छोड़ के जाते हैं, वहाँ मोहब्बतें बढ़ जाती। हम सब आपस में खुश। छोटी बहन मेरी ज़ुबैदा तारिक, वो खाना पकाने लग गई अम्मा के साथ। वो उनके कुकिंग शो मशहूर हो गए। उनकी 15-20 किताबें हैं। तो इसकी अगर आप रीजनिंग कहें तो यही है कि आप लोगों के पास एक बड़ी फैमिली थी, सब एक साथ थे, और आप लोगों की जो परवरिश थी एक ऐसे माहौल में हुई जहाँ पे ये फ़न को, मतलब आपको एक्सपोजर मिला बहुत अर्ली एज पे। बेटा, वो एक तहजीब तो सिखाई आ जाती है खुद जी। तो तहजीब का दामन हमने अच्छे हालात में भी नहीं छोड़ा, परेशानी के हालात में भी नहीं छोड़ा।
और मैं इसलिए इस बात को वाज़ेह करना चाह रहा हूँ क्योंकि आजकल वो तहज़ीब कम नज़र आती है। ये गैजेट्स आ गए ना, गैजेट्स ने तहज़ीब को ख़रीद लिया है। अगर बच्चे अब एक फ़ोन लिए सोफे पे लंबा लेटा हुआ है, कोई बुज़ुर्ग आ जाए तो देखता भी नहीं, कहते बेटा अब्बा आए होंगे अंदर, फिर अपने फ़ोन पे। ये जब ऐसा चेंज आ गया, हमें बुरा भी नहीं मानता कि ये ज़माना बदल रहा है, ज़माने के साथ सब कुछ बदल जाता है, मगर एक बेसिक तहज़ीब जो घर से मिलती है वो रहती है। First, coming back to 11 and 17 comparison, the pressure that an 11-year-old is going through versus a 17-year-old is huge. And that's where I think we're in trouble. Right. Because we deal with all kinds of pressures at all different stages of our lives, you know, whether we're adults, teenagers. I think for me, the hardest was O-levels. I've never felt that kind of pressure. The academic pressure, the identity pressure, the social pressure. Yeah, 14 to 16 or like 13 to 16. Yeah. It's a really tough age. And now with all this, now that was just pressure from academic pressure, school, parents, and a little bit of your peer group. Sure. Now you've already got that. Plus you've got like this digital pressure. Right. And you've got a big, and now you've got that pressure of, I don't know if the kids are into their, well, as celebrities we have that, but I don't know if kids also, I mean, I guess everyone, if you've got a TikTok account, you want you want followers. You want to be famous. My dad, my daughter comes and says, look, Dad, I got 1,000 views or I got 500 views. I was like, listen. That pressure. Yeah, you can't like, don't do it for the views. You can't live for that. Yeah. I said, do it because you're enjoying creating content. And that's the other thing. Like we basically don't allow faces. You could do voice, you could do animation. So I've actually taught my kids. I said, I jumped into it with them. In their Roblox account, I said, build a store. I'll invest in your store, sell product, clothes to the other avatars and make money off of that. Or build a content account targeting YouTubers to come to your store and then promote your store. So engage with it, but more in a You've got that kind of background though, for like a lay parent. Yeah, they won't, The Facebook is not working parents, you know. It's not so that's tough, right? Yeah. And that is definitely going to put strain on their emotional development, mental development. I think there should just be counseling. I think now, since the trends are changing so much, one trend that should be evolving with time is you go for tuitions to make sure that you're academically doing well. You go for your music lessons, extracurricular, but you should definitely, therapy should be something that is part of academics? Of a child's like extracurricular activities or academics. Really? Don't you think? So you're saying that like an external extracurricular, a weekly or bi-weekly therapy session. You go for tuition for math and economics and biology and Urdu writing and reading. Yeah. So this is tuition for your soul. You go for a therapy for your mental health. Where did we go when we were younger? Where did our parents go when they were younger? We didn't have this kind of pressure. And if the pressure was too much, then we'd have counseling in school, I think. Or if school didn't have it, then our parents... No, and a lot of us suffered. A lot of our generation is still suffering because they didn't have that awareness. Thanks to social media and the movement, we are A, more aware, and B, we're realizing that, oh, maybe we should have also had this, but okay, let's not dwell in the past. Moving forward, this is something that I think a lot of 40-something-year-olds would be very different today had they had that kind of counseling. Isn't that the role of a parent? Did a parent have an encyclopedia of how to That's be a also parent? True. The parents weren't counseled in parenting. Time. They were never counseled in parenting. So everyone's doing it for the first time. Right. But our generation is heavily equipped with what to eat, what not to eat, Correct. what kind of vaccines to take or not to take, where to find information on the dark web versus on mainstream media. That's true. Where to is non-stick good for you or not? What oils are good for you or not? Our parents' generation is the generation dying of cancer. Our grandparents lived to almost 90. Yeah. Because they didn't have a lot of the things that our parents' TV dinner culture parents kind of, because of the economy, the women had to also work, which meant you had to make homemaking and cooking easy for the working mom. So TV dinners, non-stick, all this kind of stuff. And our parents' generation, people born in the 1950s, all have cancer. I don't know one person or friend's parent who is not suffering because from we it. didn't know the effects of caffeine, of sugar, of smoking, of any of these things, non-stick pans, and processed foods. And we know that now. So you're saying that we are equipped to be the revolution parent generation. Of course.
We're totally equipped to be those. So our kids will be, their kids will be super But aware. we're too caught up ourselves with what. There's an agenda for social media also. What do you It's think to it dumb is? you down, And to serve what purpose? so that whoever wants to, the puppeteers can do what they're doing, and we're not motivated enough to form to basically stir up a revolution. I heard this, you say this, and this comes to mind. This exact same thing was raised. I was just traveling with someone who said the LGBTQ movement is also a way to create disparity and division amongst the masses so that people remained caught up Yeah. in identity conversations, right? So that they're not looking at what's happening in the Yeah, back. exactly. There's always something that's happening. It's war many times. It's bad press, wrong misinformation. It's Facebook. It's social media. Social media, basically, with Facebook and Instagram, now TikTok, and Right. now AI. Right. It's just going on a completely different level. But it's totally to keep you fixated somewhere else and not use your mind and intelligence and time. Most importantly, to use your time elsewhere. And how do you keep a check on that? I mean, how do you remain conscious? Do you set yourself parameters? Oh, I'm not gonna check my Insta all day, or I won't like. Well, the new thing is to be strong enough, because it's become a habit, an addiction. Do you have your notifications on in your I phone? don't have my notifications on my phone. So that's the first thing. That's a good step. Is it? Yeah, that's a Because great you don't step. feel the need to constantly check. Yeah, so like in my phone, I never have notifications Yeah. on. So I don't know who's reached out to Right, me. right, I will. right. But then what I found was my pickups increased. So I checked my pickups. Because my notifications were not on, I would end up picking it up more frequently. Right. Pick up the phone. Yeah, pick up the Right, phone, right, exactly. right. You know, so Yeah. it ends up Yeah. being a counterbalance. The other thing is also to go back to the dumb phones. But you have to have the power. Have you be tried brave it? enough. No, but I'm going to. I'm going to do it 100%. So you'll go to the dumb phone. When But do you use the smartphone? Well, so unfortunately for us in the public eye, we are now judged and based and auditioned and given work Based on on your this. social media followers. Based on your social media Instagram, followers. TikTok. Based on your social media interaction, how much Yeah. you use it, whatever, and your followers. So how do you balance that? But for children and for people who are not famous and don't need this and have other jobs, Yeah. they definitely need to Cut it down. cut it down. But if in your case, since this is your work, Well, I need to hire someone to do it for me. yeah, Just keep a check every week or so. Just do, Sarah, it might be you. Every week, 2-3 posts, here's Yeah. some pictures, just go through whatever, put Yeah. whatever, write whatever. But what if someone Does drags that make you it into a personal, not conversation? personal? No, obviously. So I'll like go for into a- example, just recently on the passing of General Musharraf, you would put out a tweet and there was a Twitter following that connected you with an old conversation to a documentary that probably happened some time ago where you had a different view. Yeah. Now suddenly it creates this virality and you are I can't drawn. help it if people are Are you drawn to respond to that? unevolved. Because I was, I think, 17 then. Yeah. That was a long time ago. That was like 17. mid 2000. Yeah. I'm in my 30s now. Yeah. People's views change, people learn, people grow. I didn't know what I was talking about then. But let's say this drags you in. Are you going to jump in? I have not. I had no idea that this happened. Right. I had no idea. No, I'm not going to read because that's not. I don't care what anyone has. I wanted to say this and express how I felt about my country and the leaders that were responsible for the situation at that time. And Right. from conversations from our parents to ourselves, it was from compared to what it is now. Yeah. A few years ago, and everyone speaks of the golden years when there was General Musharraf. Yeah. And because I know his family, so it was to extend my condolences to the family. And that's it. What people think about it, But the counter argument is today, as an actress, someone in the public eye, you have to engage with your fans, your followers. And if you're taking an approach of here, I'm going to put out content as and when I need to or want to, my engagement is not my top priority. Fawad Khan is one of our biggest stars. He has no interaction with anyone. So I don't think you need that. Tom Cruise, I don't think interacts so much. A lot of the Hollywoods, Amir Khan, zero. So this is just a fallacy, or this is just a myth, or not a myth. It is part of it, 100%. But it depends on what kind of star you want to be. Elon Musk is now one of the top celebrities, even though he's not in TV, print, movies, radio. He's an entrepreneur. But he interacts and engages with people every single day.
and that makes him this star, Popular. very big, very popular guy. And that actually drives the valuation of his companies. That drives the valuation of his ability to raise capital, getting deals done, right? But they're driven by money. I'm not driven by money. If you're driven by money, you need all that. I'm not driven by fame or money. So you're driven by what? I'm driven by my passion to do good, Create satisfying to work. create satisfying work, to make a difference, to inspire people, to motivate them, to give back to society. And what if an aspiring actor or actress is motivated or driven by money? What would you say to them? How should they plan out their career? Because I mean, that's okay. No one to tell them. I have no idea. To each his own. Everyone has to figure it out on their own. Right. Everyone has to find their own comfort zone. Everyone has to mark out what they want to be. Do they want to be famous? Do they want to be artists? Do they want to just be actors? So you can be famous or you can be an artist. You can't be both. You can be both. It's a lot of hard work. Right. And you do get a little caught up because it's very time consuming being a star. Right. Being popular is very time consuming. And if you want some sense of normalcy in your life, you can't give that much time. True. You just can't. It's not possible. I've tried and I was just like, no, I have one life and it is not going in this direction for sure. When did that happen? Oh, many years ago. When this whole Instagram thing became like, Yeah. you don't have an Instagram account. Yeah. Okay. You don't have a blue tick. Okay. Yeah. You're not even on 1 million followers. It's like, okay. I don't care. So you're not interested or motivated by doing sponsored ads on Insta and making a couple of $100K, $1 million bucks or $2. I do that. By the grace of God, I get everything despite not being immensely popular. Right. In terms of how people view what popularity is. What's the secret for that? Just being honest. Being Is that hardworking. simple? It's that simple. Come on. But everyone says it. Everyone says be honest, be hardworking, do satisfying work. It's clarity of mind. It's clarity of headspace. Yeah. It's focus on the goal. And it's being true to that commitment that gets you where you want to and keeps you content as opposed to confused, unsatisfied, hungry. Not being content is a fear. Like I always want to be grateful for where I am and what I have, and I just want to have peace of mind and be content. I don't want to be part of this race of like, it's not enough. It'll never be enough. 1 million followers is nothing now, bhai. They have 10, 12 million followers, 60 million followers. So The Rock has 300 plus million followers. So when is it enough? When are you going to cap it? Today you make this much, you've jumped up to making this much. I want 3 houses now. I built a house here, now I want a holiday home. Right. Or no, now I've got this, now I want a passport to Right. this. It's never ending. So you have to... So I'm reading this. I just want to make sure I got the somewhere. author's name right. I'm reading this book called The Psychology of Money. It's by Morgan Housel. Okay. And it talks about money and the desire to have money is about a personal it's a personal identity. It's whether you feel inferior, if you feel superior, Sure. if you feel secure, if you feel insecure. And he gives examples of multiple people who were rich and a couple of $100 million rich, But unsatisfied and happy. but went on to take great risk Oh, to do the wrong thing because they wanted to join the billionaire club. to do the wrong thing. They did the wrong thing. And one of those people was Bernie Madoff. Bernie Madoff was hugely successful, a couple of $100 million, had a successful business, legitimate successful business, greed. went on to do the wrong thing so that he could be in the billionaire club because And 100 then, millionaire club yeah. was... And where is he now? He was arrested, in jail. His son committed suicide. Then there was the former head of McKinsey, $100 million club, wanted to be in the billionaire club, did some insider trading, went to jail. It's never enough, to your point. This is where religion, meditation, good values from your grandparents teach you to just be humble Right. and satisfied and grateful. Because tomorrow you can have tomorrow you could be here, Yeah. and the next minute you could be here, and that's it. Yeah, and that was the thing that he raised is he said that the accumulation of wealth, so making money is the first part, preserving it is the second part, and they're two completely different skill sets. Yeah. Making it is risky behavior. You have to try different things to take risks to make the money. But the minute you have it, you cannot continue with risky behavior because you might lose all of Yeah. it.
You have to change your approach and now become a little bit more conservative to preserve the money that it supports you, your family, and for generations to come. Yeah. And I think that the same works with reputation. Yes. You can get there really fast. Can You you stay take there? big risks to get there, Yeah. but maintaining the reputation is tough. Because you one wrong move, one bad move, and suddenly you're- you're down, and then one move again, and suddenly you're up again, and Exactly. you're constantly yo-yoing. As a celebrity, you're constantly like, 1 minute they'll hate you, 1 minute they love you. Yeah. 10 minutes they like be this thing by one wrong move, and You're back down again. back down again. So can I put my happiness and my peace of mind in their hands? No, it's not. It's my life. I'm in control of it, and I'm the one who has to preserve it and take care of it. Abbasi and his entire team, wonderful people. And, that doesn't happen so often. 20 years of my career, I've played the Mazloom se Sakti Bhi Aurat. And then eventually I come with this, with vengeance. I mean, an actor is an actor because he tends to put himself in different shoes, and that's the best part about being an actor. But at the same time, I felt like when we were making Churez, we thought we'll have to really go underground, and we'd have to live in these burrows really, because we'll be attacked, and people will not like what we did. But, to our surprise, we had 80% of love and 20% of criticism, and we would take that any day. That's amazing. So that made us realize, and this was the Pakistani audience, and this was the time where Z5 was available to download here in Pakistan. So a lot of people watched it. There was a huge buzz. People thought it was binge-worthy, content, and they literally saw it over the weekend. And when we got that feedback, we got the love on social media and electronic media, through social media, obviously, and through interviews, we realized that people are very much ready for this. People are sick and tired of Saas Bahu drama. But the only problem is there is only Saas Bahu drama. That's their only choice. So until unless you don't give people a choice, how will you find out that they are starving for newer, fresher, different kind of content? So we were able to tap that, and we realized that, not just Pakistan, but the entire world is going through this, and they want to see different content. We're tired of the same, 26 episodes premise is whether the girl is, good enough to get married to a boy. Right, exactly. And whether she's good enough to be accepted by the in-laws. While life in Pakistan has also moved. Women are more career-oriented. Women are more focused. Women have goals. Women want to achieve those goals. Women's goal is not just to get married, and that's not the end of the end goal. It's much more now, and I feel that a lot of dramas are also being made like that now. They are picking up more career-oriented issues. They're picking up taboo issues and talking about it. But obviously, that is like 2%. And the rest of the 98% is the same. So to answer your question, we're seeing more. I get the sense we're seeing a whole lot more of this kind of content, and you not playing the Mazloom. Yeah, I'm not the Mazloom. I'm the Zalim now. So I'm the bully. But you'll see, Qatil Hasina Ke Naam is another very noir kind of noiresque thing that we did with Z5, and that was an unbelievable, very women-centric content. And so it's just unfortunate that our own productions, these are all Pakistani productions, but they're not being seen in Pakistan. And that's the only sad bit. That is so sad, because we're being appreciated globally. And here we are not even appreciating our own content, our own people. Speaking of which, Joyland was taken to Cannes. It was selected and it was awarded as Best Jury Prize, Jury's Choice. Now, wow. And yes, you were at Cannes recently, in I think a couple of months ago, for exactly this. Yeah. So a story about a small family from Lahore, from Gawal Mandi.
You know, how different could that story be? It is the truth. It is about us. It is what we go through in the society. But hopefully, we're waiting for it to come down in November and be in our cinemas. So I feel our stories are wonderful, Fazan. We just need to believe in ourselves and each other and not pull each other down. Because at the end of the day, I think we're a very subjective nation. We only think about ourselves. Barely and rarely we see people in Pakistan who are thinking for a collective cause, for a collective change, a collective mindset that needs to be embraced by everyone. And I feel that slow and steady, we're trying. And as long as we're trying every day, we'll get there. We'll get there somehow. You just said, right, Churels the too. fastest. Churels too. You just said, right, the fastest way to the top is actually the slowest way. The fastest way to reach somewhere is slowly. Is The slowly, top okay. of a mountain is the bottom of another. The top of the Yeah. mountain. Okay, got it. Those are my Yeah. two. I have a wall right here. I call it golden nuggets, and I'm down to like Oh, 15. And okay. my number two was to go fast and far. Sometimes you first need to slow down. Absolutely. Yeah. Absolutely. A lot of times, you know, people ask me that uh, why why aren't you, you know, pushing yourself in the mainstream stuff? Why don't we see you on in dramas, and why aren't you there? And I'm like, man, it's not my race. I'm the kachwa. Remember, I'm the kachwa. I'm the hare. I'm not the hare. I'm the tortoise. So I'm really happy being the tortoise, Faizan, and I feel that's the way forward. If Yeah. you rush into it, if you want to just, you know, bring people behind you and just go through it, that's not the way. You have to bring people together, and that's the kind of change you will get. Only the kind of change you will get is when you take people together and when you don't want to run away from them and ahead of them. For me, it was pure luck. I was And gonna say you can't use the luck cop out. You have to give me something tangible. Luck जो है वो सब देखें luck तो हर चीज में, you know, if you हाँ win it or you हाँ make it big, luck is obviously the right place, right time, बिल्कुल है right हाँ people, वो सब है. लेकिन यस luck के बस साथ preparation भी मत कहें, वो लक भी के साथ हाँ बिल्कुल लक होती है. But लक से there's got to मतलब be नहीं आता something else for you. एक कुछ और चीज देयर हो. इज देयर इज देयर इज क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है कोक स्टूडियो में दैट वाज एक्चुअली समथिंग वेरी आउट ऑफ द ब्लू क्योंकि पहली बात तो उस सीजन में मेरा होना भी एक मिरेकल ही था बिकॉज ऑब्वियसली जोएब काजी और अली हमजा उनको मैं जानती नहीं थी मतलब आई मेरी उनसे कोई पर्सनल जान पहचान नहीं थी कि मैं इस तरह सीजन में आ जाती सो पता नहीं किसी भी चैनल के थ्रू यू नो मुझे ये मिला उन्हीं के थ्रू मिला और जब ये शिकवा जवाब शिकवा मिला मुझे अच्छा मुझे बुलाया उन्होंने कि भाई ये कोक स्टूडियो में तुम ये वाला गाना करोगी शिकवा जवाब शिकवा और लिटरली मैं सिर्फ अपने मैं सोच रही हूँ कि यार मेरा डेब्यू है कोक स्टूडियो में लोग ने मुझे इतना बड़ा कलाम क्यों दे दिया शिकवा जवाब शिकवा और दूसरी बात मैंने कहा कौन सुनेगा कौन सुनेगा बट ऑब्वियसली ये मैं आउट लाउड नहीं बोल सकती थी उन लोगों को क्योंकि मुझे तो कोक मतलब कोक स्टूडियो में कोई भी गाना मिल जाए तो कोक स्टूडियो तो बड़ी चीज है मैन आई मीन इट्स द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म तो गाना जो भी मिले तो मैं कुछ बोल नहीं सकती थी मैंने बोला चलो ठीक है अब मिल गया अब उसी टाइम पे जो है ना जब मुझे गाना मिला तो मैंने अपने मैनेजर को भी कॉल किया और मैंने बोला यार शिकवा जवाब शिकवा मिला है और मैंने कोई खुश होकर नहीं बोला था मैंने बोलता यार कौन सुनेगा बहुत मुश्किल अल्फाज है इसके ये वो फलाना टिमकाना सो ही वाज लाइक नो नो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा अच्छा उसके बाद फिर जो है ऑब्वियसली अब मैंने कहा ना कि लक नहीं अब आती है लक के साथ साथ मेहनत अब क्योंकि मुझे पता था दिस इज माय वन शॉट ठीक है तो मुझे इस शॉट की कदर थी इस शॉट की अहमियत थी क्योंकि कोक स्टूडियो में आना जो है ना आपके लिए हिट और मिस है इट्स नॉट कि आप हमेशा हिट ही होंगे आप मिस भी हो जाते हैं देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कोक स्टूडियो में आए लेकिन उसके बावजूद यू नो वो कुछ नहीं कर पाए एंड दैट इज द स्केरियस्ट थिंग तो मैंने बोला यार इसको कैसे वर्थ इट करना चाहिए उस तरह से इसकी मैंने कोई फिर इस गाने की मैंने मतलब शिकवा जवाब शिकवा की मैंने कोई जर्नी नहीं सोची कि कहाँ तक पहुंचेगा मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रही थी मैंने बोला अब ये गाना मिला है तो मुझे नहीं पता ये कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा लेकिन मेरा काम है अपना 100% देना सो और एक और मजे की बात कि इस गाने में मैं अकेली नहीं थी शिकवा जवाब शिकवा में क्यू भी मेरे साथ थी खुरतुलन बलोच वाज सपोज्ड टू सिंग
सॉन्ग विद मी, क्योंकि इनिशियली प्रोड्यूसर्स का प्लान ये था कि क्योंकि आगे फरीद अयाज और अबू मोहम्मद कवाल पूरा ग्रुप बैठ रहा है, तो यहाँ पे 2 लड़कियों की आवाज ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए। तो बट देन पता नहीं फॉर सम रीजन मेरी कभी क्यूबी से फिजिकली मुलाकात आज तक नहीं हुई है, और ना उस टाइम पे हुई, लेकिन रोज होता था कि क्यूबी आएगी, लेकिन पता नहीं वो फिर क्या हुआ, वो नहीं हो पाया। और उसी दौरान जो है अली हमजा वाज रियली टेंस्ड, क्योंकि मेरे साथ शिकवा गाने के लिए कोई भी नहीं मिल रहा था, बहुत सारे लोग आए, और अच्छा उसी दौरान ये हो रहा है, दूसरा सिंगर ढूंढा जा रहा है, और मेरी मेहनत चल रही है, मैं रोज जाती थी और मैं रोज रिहर्सल करती थी, रोज मेहनत कर रही थी, क्योंकि मुझे एक एक वर्ड की मीनिंग, मतलब लिटरली एक तो उर्दू लुगत का सीन ये है कि जिस तरह आपको इंग्लिश वर्ड्स के मीनिंग्स मिल जाते हैं ना, अल्लामा इकबाल के वर्ड्स की मीनिंग आसानी से नहीं मिलते हैं, उनको तोड़ तोड़ के ढूंढना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक पूरा वर्ड मिला तो उसको मैं इंटरनेट पे डालूं और बोले इसका मतलब ये, उसको तोड़ के कि मतलब खूगरे पैकर, तो भाई खूगर पैकर, इस तरह के आप वर्ड्स देखो। तो मैं मीनवाइल ये सब कर रही थी, पूरी रिसर्च कर रही थी, मैंने नोट्स बनाए थे, तो मेरी मेहनत चल रही थी। तो अब सबकॉन्शियसली शायद मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी इस गाने को लेकर, जो मुझे भी अंदाजा नहीं था। और जो भी नया सिंगर आता था तो उसके लिए भी मैं वोकल्स करके रखती थी कि वो सुने, क्योंकि मुझे था कि जो भी आए वो इतना अच्छा हो कि मेरे साथ जो बंदी अच्छी होगी तो शी विल मेक मी शाइन ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो बुरी हो तो फिर मैं अच्छी हूँ तो फिर गाना तो वैसे ही फिर डाउन द ड्रेन चला जाएगा। सो आई रियली वांटेड समवन वेरी गुड, लेकिन कोई इस तरह आ नहीं पाया। फिर इवेंचुअली जो है ना, फिर वी वर शॉर्ट ऑन टाइम, और अली हमजा ने देखा कि मैं गाना पी चुकी हूँ मीनवाइल, कि ये इस प्रोसेस में मेरे सिस्टम में गाना बैठ चुका है अब, तो फिर उन्होंने कहा कि यार अब तुम ही कर लो ये गाना अकेले। और उस टाइम पे फिर मैंने बोला कि यार अब एक टेंशन थी शिकवा जवाब शिकवा, मैंने बोला दूसरी टेंशन ये कि ये लोग मुझे फरीद अयाज कवाल ग्रुप के बराबर, मतलब उनके ऑपोजिट मुझे खड़ा कर रहे हैं। मैंने बोला उनको देखो और मुझे देखो, मतलब पीपल माइट थिंक कि मैं अक्सर अपने मैनेजर को बोलती थी, यार अगर लोगों ने बोला किसको खड़ा कर दिया कवालों के साथ, ही किस बेवकूफ लड़की को खड़ा कर दिया, मुझे इस बात का भी डर था। तो बहुत डरते डराते मैंने ये कलाम किया है, और मैं कॉन्स्टेंटली दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मेरी इज्जत रखना, क्योंकि मुझे पता है जिनके साथ खड़े होकर मैं गा रही हूँ, मैं शायद उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे ये जगह दी है तो मेरी कोशिश है कि मैं अपना 100% दूं, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन उसके वो गाना करने के बाद जब मैंने वो करते वक्त डिड यू कम इनटू दैट फ्लो स्टेट? हाँ, तो वो एक अलग किस्सा है। तो while I was doing that, अच्छा there's another reason I got this song because अली हमजा और ज़ुएब काजी ने एक चीज नोटिस की थी मेरे अंदर, that was rage. तो I'm like generally मैं You just said आदतों में Smileys are such friendly and nice, happy people. यार ये rage कहाँ से आ गया? देखा मैंने बोला था, it's very contradicting because देखो मैं अभी भी बहुत मैं वही कह रही हूँ कि मैं नहीं कहीं पहुंची हूँ, ठीक है, एक स्पिरिचुअल लीडर को मैं फॉलो जरूर करती हूँ, लेकिन अभी भी बहुत फ्लॉज हैं। और वो रेज मेरे अंदर इसलिए था, और शायद अभी है भी कि नहीं भी याद नहीं है, लेकिन उस टाइम पे तो इसलिए था क्योंकि मुझे प्रूव करना था अपने आप को। क्योंकि मैं जब सिंगर बनी थी तो मेरे फैमिली में बहुत इख्तिलाफ हुए थे, स्पेशली फ्रॉम माई फादर। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, 2 साल पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन उससे पहले जो है उनसे बहुत इख्तिलाफ हुए थे, और उन्होंने मुझे अपने लफ्जों में ये कह दिया था कि तुम कभी नहीं पहुंचोगी। उन्होंने मुझे चैलेंज दिया था कि तुम नहीं कर पाओगी, तुम बेवकूफ हो। पहले तो कि ही नेवर वांटेड मी टू बी इन दिस फील्ड, और एंड देन बिकॉज मेरे अंदर फर्म बिलीव था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, बट ही नेवर बिलीव्ड इन इट। और उन्होंने साफ साफ डिक्लेयर कर दिया था कि मैं जलील ख्वार हो जाऊंगी। दिस इज व्हाट ही। तो वो रेज मेरे अंदर था, वो कि आई वांट टू प्रूव कि आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम व्हाटएवर आई एम डूइंग इज राइट, एंड आई विल मेक यू सी इट। सो आई थिंक वो रेज मेरे अंदर था, और वो रेज उनको दिख गया। और शिकवा जवाब शिकवा में बोलते ना कि रिक्वायरमेंट ही स्पेशली शिकवा में रेज की थी, क्योंकि वो शिकवा है, इंसान शिकायत कर रहा है अल्लाह से। तो मुझे थ्रू आउट जो है ना वो पर जो है ज़ोएब काजी, हाँ, तो मैं हंसती रहती थी। मतलब आप सेट पर हो और आप मस्ती मजाक कर रहे हो, तो ज़ोएब काजी आके मुझे कहता था कि सीरियस हो जाओ, तुम्हें गुस्सा करना है, तुम्हें कैरेक्टर में रहना है, तुम्हें गुस्सा करना है, क्योंकि तुम्हारे गाने में गुस्सा है। और मैं कह रही हूँ यार देखो, गुस्सा मेरे बाएं हाथ का खेल है, हो जाए। एंड तो या मतलब फिर मीनिंग भी पता थी, सब पता था। और आई थिंक वो फिर मैंने कहा ना कि कुछ चीजें वर्ड्स बोलते हुए होती हैं, आप नहीं फील करते, लेकिन जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया
तो उस वर्ड्स की वजह से मेरे वो अंदर के इमोशंस बाहर आने लगे और आई वॉज क्वाइट एनिमेटेड इन दैट सॉन्ग, क्योंकि वो गाना देखने के बाद मैंने काफी लोगों के कमेंट्स भी देखे कि यार उसके हैंड जेस्चर्स, उसका ये उसका वो, मैंने बोला इट वाज नॉट प्लान्ड, आई थिंक आई वाज एनिमेटेड बिकॉज ऑफ द वर्ड्स एंड आई वाज एक्चुअली एनग्रॉस्ड इनटू इट। और हालांकि मुझे ये भी याद है कि मुझे लिरिक्स पूरे याद थे, लेकिन आपको एक डर सा लग रहा होता है ना कि कहीं आपका ब्लैंक ना हो जाए, तो मैं लिरिक्स रखवा भी रही थी कि मेरे सामने रख दीजिए। तो वहां पे जो है ना, फिर ज़ुएब काज़ी's wife इंसिया, she was the one who was like, Natasha, it will be better if you don't look at the lyrics at all. I was like, I don't want to, but either I don't want to make any mistake also. But then but when I started singing ना, मुझे lyrics देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि वो हाँ, मुझे वो बस हो गया। और वो करने के बाद भी मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करके आई हूँ। I was still very doubtful. लेकिन जब मैंने उसका फिर जब मैंने उसका फाइनल देखा कोक स्टूडियो वाले दिन, क्योंकि फिर मेरी तो ईद हो गई थी, क्योंकि वैसे ही आवाम को कोक स्टूडियो का इंतजार होता है, ठीक है, और वो सीजन का पहला गाना, द कोक स्टूडियो ओपनड विद द सॉन्ग शिकवा, तो आई वाज लाइक ऑन द सेवंथ स्काई। तो उस दौरान व्हेन आई सॉ माय सेल्फ ऑन द स्क्रीन, आई किड यू नॉट, आई कुड नॉट बिलीव दैट वाज मी, एंड for no reason the tears started rolling down, and because everything was मेरे flashback में आ रहा था, मेरे अब्बा की बातें, उनके जितने उन्होंने मुझे चैलेंज किया था, वो सारी चीजें मेरे आगे आ रही थी, और I could not stop crying. Yeah, so this is what happened. Wow. इसमें मैं इसको I'm going to summarize the takeaway. Obviously luck तो था, because luck ये था कि you got the opportunity to do it, out of the और luck ये था कि your song was the first song of the season. तो ये coincidence, right? ठीक है, थोड़ी सी first song of the season में मैं कहता हूँ planning भी होती है, producer देख समझ के काम करता है। The second thing, ये मैं कहना चाहूंगी कि it was ज़ुएब काज़ी's call to keep शिकवा as the opening song. ठीक है, तो मैं कहूँगा चलें there was some planning. But there's two things I picked up here which I really liked. एक तो as a singer, most people think that you need to practice your vocals and your pitch and your tone and all of that stuff. But what you just said is you got deep into the meaning of the words. I mean, you broke down the words and you really researched the words, and the words and you and their meaning became one. Matlab, you did not need to read words, you felt the words. ठीक है ना? Even though they were not your words. Right? एक अलग होता है ना, singer songwriter का game अलग है, क्योंकि वो दिल से उनके अपने लफ्ज हैं. But you took someone else's words and you dug so deep into it that they became yours, and then finally there was a natural life situation at home that gave you the fire. Okay? This is a unique combination, and I think that what I'm trying to say is that this applies to everyone trying to achieve great success. Luck bilkul has to play a role. Uske bagair nahi hota hai. Preparation in all forms, ठीक है ना, जो भी preparation required है, लेकिन वो जो fire की बात है ना, वो जो internal एक होता है कि यार I have to prove that I can do it. ये बहुत important चीज़ है, और हर बंदे की fire different जगहों से आती है. You got yours through the interaction with your father. Someone else might get it from some place else or some other past life experience. Like, and I think this is interesting. I mean, I think that understanding that it's the combination of these 3-4 things that actually drive this level of success for anyone. Chahe wo Cook Studio, chahe kuch aur. Interesting. Bilkul. So, and you didn't have a plan to be in media, but it was in the family. And he's a pretty known producer. He's a director-producer. He belongs to the entertainment side of it. Right. So that you must have grown up with that. I grew up with the cameras in the studio around Which means that it was a natural progression. So that means it was inbuilt in you somehow. And that trigger event at 15 just, I guess, incited that passion for it, no? Well, I'll tell you something. I have an interesting tale. So once I came back after winning in England, there was this PTV anniversary marathon happening, and nobody wanted to do the graveyard shift, which was early in the morning, 8 a.m. We were supposed to roll out the program. And because PTV had covered me and they had made that link that, oh, her dad is here, so she's practically our child, and whatever. So I was almost bullied into doing the graveyard shift. I reluctantly did that. Not and happy how old were you? I was, I think, probably 17, 18 at that time. Okay. Did not enjoy it. I had Junaid Jamshed as my co-anchor, grudgingly dragging my feet. And I remember distinctly, Faizan, once I was done with it,
I wanted to say my salam and my courtesies to the general manager, who was Adil uncle at that time. I walked in and I see Moin Akhtar there. I see Bushra Ansari there, Moin uncle and Bushra auntie. She looked at me and she knew my reluctance and my resistance to media. And she said, देखा मैंने कहा था कुछ भी हो जाए घुटने पेट की तरफ मुड़ते you will end up in media. Till date I tell her it was your self-fulfilling prophecy that has landed me here. No, but do you think that has a role to play, that if a parent is in an industry and the child sees that parent sort of commit their life to it and grows up around it, that it somehow does seep in? And maybe, you know, some kids reluctantly take on what their parents do and they're like, oh, I didn't choose this, I'm doing it because I have to. But in your case, you at the age of 15 got that recognition, which made you make the choice, you know, but would you have gone down that path had your dad not been in media? It certainly made it easier because you see, back when media was opening up, everyone who was in media in any capacity, be it be a technical capacity, the cameramen, the audio people, the directors, they one way or the other knew the people who were from PTV, the prodigies, the legends, because they're trained under them. So there was a lot of respect. So you felt that responsibility that there's a certain name that you carry. And then secondly, I remember my dad being so happy once I formally started doing TV. And with PTV, they were trained abroad. So my dad had gone to Europe and he had done his secondment in Malaysia because the state television would send you. Right. And dad gave me his old books and lecture notes. He's like, oh, you need to understand, for example, how your set is going to be lit up, how you're supposed to be around light. And I remember him giving me my basics. Okay, if this is the camera angle, this is how you position your body. You know, बहुत flat पीछे से नहीं होना चाहिए. तो जहाँ सोफा रखा उससे पीछे तक at least 5 feet जगह होनी चाहिए. Right. And I was a nerd, so I loved. You know, I fell in love with the craft of it. I enjoyed it. And so that's a lot of training. Which is what makes you different from, let's say, some of the other hosts and anchor persons and presenters that we see. It's because you had that kind of training from a seasoned professional who, by the way, was your dad. And I think you're 2 sisters. I have got 2 younger sisters. Yeah. I'm the eldest, and they didn't follow a similar career path. Actually, because you know they felt overshadowed. We all went to the same school. We were all Beaconites, and because I was this A-star student plus very active in co-curricular, unfortunately they bore the burden of always being compared to me. So they knew if they would enter media, it would then again become Sidra's sister. Yeah. And both of them are very strong personalities. So they're like, okay, anything but that. Basically, community at a scale level. हाँ, कि मुझे एहसास हो. अगर मुझे एहसास ही नहीं है, तो मैं तो डबल पार्किंग में गाड़ी लगा के सिनेमा में जाके कैसा दिया. मैं तो कैसे कर सकते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग एट अ स्केल? सिंपल आप ये छोटी चीज़ें ये स्टार्ट कर लें. आप कुछ मैं आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपने हिसाब से आर्ट से उसको जोड़ रहा हूँ कि आर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ज़िंदगी ट्रस्ट ये शहजाद रॉय साहब का है. उनके स्कूल में एक चला रहे हैं गार्डन में, तो गर्ल्स स्कूल है. तो उनमें वो बता रहे थे कि 6th क्लास के बच्चे ये बोलते हैं कि ये पंजाबी है इसके साथ मैं नहीं बैठूंगी, या ये बलोची है मैं इसके साथ नहीं बैठूंगी. तो हमने सोचा कि हम ऐसे करते हैं कि हम उन थिएटर में इम्प्रोव सिखाऊंगा दोस्तों के साथ, जो हम मेरे लॉल वाले बॉयज़ हैं उनमें से हम एक आध दोस्त, या आई थिंक साकिब समीर भी थे शायद. तो हम दोस्तों को लेके मैंने उनको 4-5 वर्कशॉप किए, डेज के वर्कशॉप किए. और फिर उन्होंने बोला हम एक फ़िल्म हमने लिखी है बच्चों ने, और हम उसमें एक्टिंग भी करेंगे. मैंने कहा ठीक है. मैं अपना कैमरा लेके आया, हमने फिल्म बनाई. बाय द एंड ऑफ इट they were so, because in when you have to make a film or make a scene together as 2 performers, आपको put aside, you don't care वो बलोची ये, आपको लगता है कि यार सीन में ये मेरी माँ है और मुझे सीन चलाना है. 2 कैरेक्टर्स एक सीन बना रहे हैं बस. That character supersedes your reality and suddenly you're not that. You're not stuck in those limbos, those boundaries, and that really helped the kids. And because they were able to see the others without that lens that they grew up with. Yep. The boundaries that were created and manifested in their brains, for example. Yeah. And that's what you're saying, is to scale community that way. Why not do it with comedy? You've excelled at this. You're probably the #1 comedian in the country. Your Insta, your blog, your podcast, I mean, they're blowing up. Why not scale this? Because
अगर आप देखें बाहर के मुल्क में, इवन इन द यूएस, अगर आप देखें यूएस में दे यूज कॉमेडी टू डिलीवर न्यूज़, दे यूज कॉमेडी टू चेंज ओपिनियन। आप चाहे वो जॉन स्टुअर्ट डेली शो आता था एक ज़माने में, अब वो ट्रेवर नोआ कर रहा है, बिल्कुल, कोनन ओब्रायन इवनिंग करता है, यू नो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह का कल्चर हम यहाँ पे क्यों नहीं ला सकते जहाँ पे कॉमेडी डिस्कोर्स को ड्राइव करे? आई थिंक ऑन द इंटरनेट ये ऑलरेडी हो रहा है. Junaid, Manny Muru, a lot of people, Akbar, a lot of these people are talking about these issues in a comedic way. I've been doing it, but I think टीवी पे अभी वहाँ टीवी नहीं पहुँचा. इसकी वजह क्या है? आप देखें सिम्पसन्स जैसा कार्टून भी है ना, उसके भी 20 राइटर्स हैं. हाँ. आप अगर ये जॉन ऑलिवर की बात करते हैं या जॉन स्टुअर्ट की या ट्रेवर नोआ के शो की बात करते हैं, इन शोज़ के राइटर कम से कम 15, 20, 25 होते हैं. बिल्कुल ऐसे. फैमिली गाय है, सिम्पसन्स है, वो भी पॉलिटिकल डिस्कोर्स की बात करते हैं. और उनके भी आप राइटर्स देखेंगे तो इतने ही होंगे. ठीक है. बीच कुछ सालों पहले राइटर्स गिल्ड की स्ट्राइक हो गई थी, हॉलीवुड बंद हो गया था, बड़े बड़े टीवी शोज बंद हो गए थे. यहाँ पे आप देते हो टॉप एक्टर को एक सीन के लाखों रुपए, और जो आपका टॉप राइटर भी होगा ना, उसको मेरे ख्याल से लाख, 1.25 लाख पर एपिसोड नहीं मिलता होगा. और एक एपिसोड 22-25 मिनट लिखना या 40 मिनट्स लिखना ऑन पेपर इज़ लाइक अराउंड 40-50 पेज की राइटिंग. तो आप देखें ड्रास्टिक सीन क्या है कि मैं एक्टर हूँ, मैं आया, मैंने 6 लाइनें 7 लाइनें बोली, एक सीन कर लिया, मैं लाख रुपए उठाए, मैं चले गया. और एक राइटर जो दिन रात करके वो 40 पेजेस, कम से कम वो 40 घंटों में तो लिखता होगा ना. बिल्कुल ऐसे ही है. उसकी सोचना कि अब क्या होगा वो तो अलग बात है. वो भी अलग. सो इसकी वजह क्या है? और वो एक राइटर होता है. और क्यों? आप कोई भी ड्रामे में देखेंगे आज तक देख लें, आई गारंटी यू दे विल नेवर बी 2 राइटर्स के 2 राइटर नहीं लिखा है. वो ईगो भी होती है. मैं तो खलील रहमान हूँ, तो मैं हूँ, बस मैं हुमायूं सईद. वहाँ पे तो भाई डिफरेंट मार्केट्स में हर एपिसोड का अलग राइटर होता है. बिल्कुल. डायरेक्टर भी अलग होता है भाई. लॉन्ग रनिंग शोज के राइटर्स डायरेक्टर्स अलग है. बिल्कुल. तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं. तो क्यों, वजह क्या है? राइटर बनते कैसे हैं, मतलब बनाते कैसे हैं, उनको पे कैसे करते हैं? क्योंकि अगर इफ यू आर सेइंग कि राइटर की सप्लाई कम है, नहीं, राइटर की सप्लाई कम नहीं है, चैनल पैसा नहीं देना चाहता राइटर को. बट उसके बगैर तो शो ही नहीं है. हाँ, तो वो कम से कम देगा ना, या वो अगर रिस्क करेगा तो खलील रहमान या कोई बड़े जो राइटर हैं इनको पकड़ लेगा, उनको पैसे दे देगा. वो भी देखा जाए तो एक सीरियल से प्रोड्यूसर जितना पैसा कमाता होगा ना, उसको उसके लिए 40 लाख के 40 एपिसोड लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है. वो उससे कोई 20 करोड़ कमा रहा है. तो उसको वो फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए वो फीस इतनी नहीं. तो राइटर की वैल्यू क्यों नहीं है यहाँ पे? क्योंकि हमारा मीडियम, मुझे नहीं पता, अब ये तो ओपिनियन होगा कि क्यों यहाँ ऐसे पहुँचा, पर अभी जो हालत है ना वो ये है कि वी वांट अ बिग नेम, वी वांट अ गुड फ्रेम, आर्ट डिज़ाइन चलें, थोड़ा कर लें, अगर थोड़ा बड़ा ड्रामा करना है, बड़े नाम लिए, वही स्टोरी चलें, उसी स्टोरी में थोड़ा बहुत हम चेंज कर लेंगे. पहले ये किया था कि लड़की ने 2 शादी की थी, तो इस ड्रामे में हम 2 लड़के की 2 शादियाँ करा लेते हैं और उसका बाप मार देते हैं, तो कुछ ऐसा डाल देते हैं. वही स्टोरी आप देखें, जहाँ उनको गोरा एक्टर लेके ब्लैक फेस करके काला दिखा, वो भी दिखा देते. मतलब कोई हम वहाँ ही फंसे हुए हैं. दुनिया कहाँ चले गई? अगर ये कहीं दुनिया में होता, हम सब गालियाँ दे रहे होते, ट्रिगर हो जाती, ये प्रोडक्शन बंद हो जाती. तो हम कोई और लेवल पे चल रहे हैं, जो ये बना रहे हैं ना. तो इसका मतलब ये कि वो पैसे देख रहे हैं, उनको पता है पैसे तो आने ही है, तो चाहे आप थोड़ा सा वेरिएशन ले आए, तो हमने अच्छा काम क्यों करें, बजट क्यों बढ़ाएं? ओरिजिनल काम किसी ने नहीं करना है. नहीं, दैट्स नॉट द ऑब्जेक्टिव. इट्स अ फैक्ट्री. आप फैक्ट्री को चलाना है, आपको माल निकालना है. अच्छा, ये YouTube पे नहीं हो रही है. YouTube पे तो ओरिजिनल काम हो रहा है. YouTube पे हैं भी फैक्ट्रियाँ, उधर भी है, पर YouTube सच अ वास्ट. अब मुझे चैनल नहीं चाहिए ना. अब मैं जैसे फॉर मी व्हेन आई मेड वडेरे का बेटा, आई टुक इट टू चैनल्स, दे सेड ये नहीं चलेगा, दे डिडंट प्ले इट. देन इट वेंट ऑन इंटरनेट, इट बिकेम बिग, देन दे प्लेड इट.